Hello students. Now further in major landforms of the earth, we will study types of mountains. Types of mountains. On the basis of their shape, size and height, mountains may be of the following four types: fold mountains, block mountains, volcanic mountains and residual mountains. Fold mountains. These mountains are formed when the earth crust bends due to the Earth's movement. The internal movement causes folds on the Earth's surface. It results into several ups and downs. फोल्ड माउंटेन मतलब वलित पर्वत. ये माउंटेन्स कब फॉर्म होते हैं? जब अर्थ क्रस्ट बैंड होती है अर्थ की मूवमेंट की वजह से. द इंटरनल मूवमेंट कॉजेज फोल्ड्स अप on the earth's surface. It results into several ups and downs. The upper part of the fold is known as anticline, while the lower part is known as syncline. Fold mountain usually consist of parallel ranges. जो फोल्ड माउंटेन्स होते हैं वो पैरेलल चलते हैं, मतलब समांतर चलते हैं. Most of the mountains on the earth are fold mountains. These mountains are characterized by rugged relief and the high conical peaks. All the fold mountains are of different ages. On the basis of ages, they are known as young fold or old fold mountains. Young fold mountains have high and pointed peaks. Himalaya, Alps, Andes, Rockies are significant young fold mountains of the world. Old fold mountains have rounded features with low height. Great Dividing Range, Australia, Pennines, Europe, Appalachian, North America, Ural, Russia, etc. are the major old fold mountains of the world. Aravalli Range lies in peninsular India. It is one of the world's oldest fold mountain system. Block mountains. Block mountains are formed when a landmass between parallel faults in the earth crust is pushed up or when the land around it sinks. Block mountains are formed when the land masses between parallel faults in the earth crust is pushed. जैसे कि अर्थक्वेक आया तो जब पहाड़ों को आपस में धक्का लगता है, या तो एक पर्वत एक तरफ की ज़मीन ऊपर उठ गई या दूसरी नीचे बैठ गई, तब ब्लॉक माउंटेन्स फॉर्म होते हैं. द अपलिफ्टेड पार्ट ऑफ द लैंडफॉर्म इज नोन एज हॉर्स्ट, वाइल द लोअर लैंडफॉर्म्स आर टर्म्ड एज गार्बेन. Wasatch Mountains mountains and Rhine Valley in the Europe are the example of block mountain system. Rhine Valley is located between Wasatch and Black Forest. Mista in Spain and northern and southern uplands of Scotland are some other examples of horst and garben. Volcanic mountains. These mountains are made up of the accumulations of volcanic material ejected from the Earth's interior. They have comparatively gentle slopes. Mount Kilimanjaro, in Africa, Mount Fusiyama in Japan, Statuti, Mexico, Etna, and Vesuvius, Italy are the example of volcanic mountains. Uses of water or advantages of mountains. That why should we have mountains? Mountains are rich source of waters. Mountain glaciers are the source of water for many rivers. These perennial rivers provide water for inland navigation, hydroelectricity and irrigation. माउंटेन्स हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं? क्योंकि पानी का सबसे बड़ा स्रोत माउंटेन से ही मिलता है. जितने भी ग्लेशियर्स हैं उनसे बहुत सारी नदियों को पानी मिलता है, और वो पानी हमारे किस लिए काम आता है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए और इरिगेशंस के लिए, खेती के लिए. माउंटेन्स प्रोवाइड मैनी बिल्डिंग्स मटेरियल सच एज ग्रेनाइट, मार्बल, लाइमस्टोन एक्सेट्रा. माउंटेन्स जो कि रॉकी माउंटेन्स होते हैं उनसे हमें क्या मिलता है? बिल्डिंग मटेरियल्स मिलते हैं, पत्थर मिलता है जिससे हम घर बनाते हैं.
वो माउंटेन से हमको ग्रेनाइट भी मिलता है, मार्बल मिलता है, लाइमस्टोन मिलता है। मैनी प्रीशियस स्टोन्स लाइक डायमंड, रूबीज, सफायर्स एंड ओपल्स आर ऑल्सो फाउंड इन माउंटेन्स। जो प्रीशियस स्टोन्स हैं जैसे डायमंड, रूबीज, ये भी हमें किससे मिलते हैं? माउंटेन से। रिवर वैलीज एंड टेरेस्ड फार्म्स आर द आइडियल फॉर कल्टिवेशन। पीपल ग्रो टी, wheat, fruits, etc. in the mountainous areas. They provide grassland for cattle grazing. जानवरों को चारा खाने के लिए भी ग्रास मिलती है माउंटेन से। माउंटेन्स प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना. Mountains provide shelter for wild animals. Mountains are rich source of timber and other raw material like resin and gum, etc. Mountains maintain ecological balance, check environment pollution and soil erosion. Some mountainous regions act as the tourist sites. Tourists visit the mountain for their scenic beauty. Mountains are also popular for several types of sports like skiing, river rafting, paragliding, hang gliding, etc. Limitations of mountains. हर चीज़ के फ़ायदे हैं तो नुकसान भी हैं, तो उसकी लिमिटेशंस क्या है माउंटेन्स की? दे लैक इन फर्टाइल सॉइल. माउंटेन्स पे जो फर्टाइल सॉइल है वो उसकी कमी है. दे रग्ड माउंटेन्स ट्रेन्स मेक्स ट्रांसपोर्टेशन एंड फिजिकल कम्युनिकेशन difficult. Mountainous areas are not much favorable for cultivation due to steep slopes, less availability of land, and cold climate. Due to the above limitations, mountains are thinly populated. Barely 12% of a person population of the world is living in the mountainous areas.